Friends, you all know that consultations are the flavor of the day. Our Prime Minister has been busy consulting industrialists, consulting business people, consulting the richest Indians. We believe that the time has come to consult the ordinary people of Delhi. And the fact is that Samvad is the spirit in which we're doing our work. You know that our slogan is Delhi ke dil ki baat, Congress ke saath. And the Samvad we're doing is to get a two-way communication. We will release a manifesto in due course, which will be our message to the people. But before we release our manifesto, we want to get the people's message to us. For that reason, especially given the turmoil that our country is going through, the stifling of dissent, the attacks on the university campuses in Delhi, all of this have given us very much the sense that instead of trying to silence the voices of the students, the ordinary public, it is time to welcome those voices and hear them. So we have decided today to issue a call to all the citizens and voters of Delhi to give us their ideas for our 2020 manifesto. And we're making it easy for them by giving them multiple ways of reaching out to us. Many people are on WhatsApp, so a WhatsApp number has been given, 9625 777 907. Now, if some people don't have WhatsApp, but they want a link, they can just give a missed call to 1-800-1215 55558. And if they call that number, they will immediately get, within a few seconds, a form link which will come to the same number from which they have called, and the same form will ask them for their suggestions. There is also the website that the Congress Party has put out, delhikibaat.com. delhikibaat.com, and there is also an email address, manifesto@delhikibaat.com. Then, of course, you already know the INC Delhi Facebook page and the INC Delhi Twitter account. That's always available. People can give suggestions too. So essentially, there are 6 different ways in which people can reach out with suggestions. But we're not even stopping with that. Chopra Sahib has said that people write in any shape or form to him, offering ideas, we will take it. We're also going to have a series of Facebook talks where we can get direct suggestions on Facebook Live from the members of the public. And there will be, through all our leaders, including all those present here, various interactive sessions. Women, youth, students, street vendors, small business people, auto wallahs, you name the constituency, some Congress leader will interact with them, get their ideas, put our hands on the pulse of these constituencies. And the important thing at the end of the day is that we should have a manifesto that reflects the true wishes of the people and not only of the fat cats. आप लोगों को पता है कि दिल्ली में आजकल हमारी हालत और देश की हालत काफी बुरा है। यहाँ तो दिल्ली में आप कहेंगे कि झाड़ू का झांसा कमल ने फांसा। And in between that, the Congress is going to rise and talk about how we can help save Delhi and set an example for the whole of India. We have seen over the last couple of days a number of setbacks. I'm happy to take your questions on this particular initiative or any other matters that are of national importance or local importance that are on your minds. So I'll stop there. आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए. जय हिंद. Don't you feel that supporting CA Congress is giving the party to the minority seats only, and how would we that issue is actioned? First of all, the Congress Party has been very honest and open about its very principled stand on the CAA. This goes back to when the CAA was brought to the House. Both in the Rajya Sabha and the Lok Sabha, we took a very strong, clear stand that introducing a religious test for citizenship is a fundamental betrayal of the spirit of the freedom struggle. This would no longer be the India that Mahatma Gandhi fought to free. This would not be the India that Dr. Ambedkar spoke so eloquently about in the Constituent Assembly when he talked about how minorities should be made to feel secure in this country.
This is not the India where Sardar Patel stood up and said that the nation owes a duty of protection to those who are weakest and vulnerable, including the minority communities. We have made it very clear that on this issue of principle we will not compromise, but we don't believe we are only speaking for one small section of India. We are speaking for the soul of India. We are speaking for the whole of India. We are speaking for the spirit of the nationalist movement and the freedom struggle when we say that this is the India we want to see. And let me tell you, these spontaneous student agitations, the people going out in the streets, the people singing songs, they are chanting the national anthem at midnight because they believe this is the nation we have been cherishing and looking after for 72 years that is being betrayed by this legislation. So you can't reduce the CAA to an issue of people of one religion alone. It is an assault on what every Indian should hold precious, which is the inclusive nature of India, the pluralistic nature of our civilization, and the unifying spirit of our constitution, all of which are being assaulted by the government. That is not just a matter for Muslim Indians, it is a matter for all Indians. And we are standing up for all Indians. Sir, you mentioned that in the students' movement that is going on, there are national anthems that is being sung. But at the same time, BJP has been tweeting a number of videos showing Free Kashmir posters and also Jinnah Wali Azadi in Shaheen Bagh that was raised apparently. It was never there. It was never there. Jinnah Wali Azadi, nobody asked for Jinnah Wali Azadi. It was Ambedkar thing. It was Gandhiji thing. It was never Jinnah thing. But these are some of the slogans. Okay, but let me answer that first of all by saying that we have unfortunately seen that some people associated with the ruling party have no compunctions about even issuing videos whose authenticity has been severely doubted. Do not forget that this entire business about Tukde Tukde, which is one of the favorite phrases of the Tukde Tukde gang that are ruling us today, they have been circulated that video in 2015 at the time of the Kanhaiya Kumar issue in JNU. And to this day, nobody has been able to demonstrate that that is actually true. It seems to have been dubbed onto the soundtrack of a demonstration on other issues. So it's very difficult for us to take anybody's face value of what is being said or not. On the question of Free Kashmir, the specific lady who was arrested for holding that poster has explained that what she meant was to free Kashmir of all the restrictions that the government has imposed on it, internet, mobile connectivity, restrictions on normal activity. And that is something which frankly the Congress party has also called for. Why do we have our political leaders arrested in Kashmir? Why do we have no internet for 5 months? These are questions that we have also asked. So in that spirit, it is not a question of freeing Kashmir from India. It's a question of letting Kashmiris enjoy the freedom that is their right as Indians to enjoy. That is the point that we should understand. And I think it's very easy for the BJP, when they have lost the hearts of the people, to try and create these kinds of false angles and false stories. And it must be made very clear that this is a pro-Indian patriotic act to stand up for the Constitution of India. We are proud of the fact that in doing this we are supporting the true soul and the true spirit of India. Talking about the citizenship amendment, Union Home Minister for State Education has said that the Centre will make changes in the Citizenship Amendment Act if citizenship of any single person of the state is affected. It is the Congress party who are misinforming the citizens of our country. Well, I think you've all seen Mr. Amit Shah's speeches, that is the Minister of State's boss, the Minister of Home Affairs, has spoken in both the Lok Sabha, I have heard him, I was present, and the Rajya Sabha, and he has given something like 9 different interviews in which he has said over time and time again that the CAA will be followed by the NRC and that the purpose of the NRC is to identify people who are not eligible for Indian citizenship. And now that the CAA has said that there is a different onus on Muslims and non-Muslims, the de facto conclusion is inescapable. That the NRC, if conducted, would become an exercise to essentially identify people of dubious citizenship from one religious community alone. Now that's not India. That's not something that anyone can absolutely accept or tolerate.
I just want to say to you that on these matters, we have seen the Prime Minister shockingly say to the nation that the NRC has never been discussed. Now, are we all deaf and dumb? Is every one of you making up these videos and putting it on TV? Or Mr. Shah did not discuss it? So we have to understand the government is hastily trying to cover its tracks. If they are publicly prepared to say we are dropping the idea of the NRC and that the CAA, you said, the Minister of State has said amendments can be made, let them please bring amendments to Parliament. Parliament is supposed to be meeting within less than a month's time. Let us get new amendments from them. We will certainly want to look at it seriously. But you have to understand, we can only go by their own words. What they have said, what they have declared, the intentions they have conveyed, these are unambiguous. These millions of people are not out on the streets in India for fun. They are not giving up their leisure time, their evenings, their exam preparations. And what is the reaction we have seen to stifle them? You have seen what happened in Jamia. I'll never forget that haunting video of that girl student saying, I'm a law student. Tomorrow is my constitution exam. You have broken into my women's hostel and beaten me. You have actually assaulted people studying in the library. You tell me, what should I write in my constitution exam? What have you left of the constitution? That was the question the student asked. What have you seen in JNU yesterday? And day before on Sunday? I mean, this is an astonishing descent for Indian politics. I'm not saying that our politics is noble or perfect, but this kind of behavior was what was seen in Germany in the 1930s, when students with masks went in and beat up other students at the behest of the ruling party. Are we going to descend to those tactics? And I must say, it is absolutely stunning, on the one hand, that the police are instructed to go in without the permission of the Vice Chancellor on one occasion, and they proceed on a rampage themselves. And on the other occasion, they're instructed apparently not to go in, because the attackers this time are conveniently on the right side, quote unquote. Now, I must say that we have to have some clear standards here. I can speak as a father, as a former student of Delhi University, not of JNU, but with many, many classmates and friends in JNU as well. That, as far as we are concerned, the actions of the police, which as we know are accountable to the Home Ministry, are reprehensible. सुभाष जी, एक सवाल आपसे है। शोएब इकबाल ने पार्टी छोड़ दी है। वो कह रहे हैं कि जब वो कांग्रेस में थे तो आरोप लगाया था कि केजरीवाल को जेल भेजेंगे अगर उनकी सरकार बनी तो। अभी आपका शोएब इकबाल को लेकर क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहेंगे? सुभाष जी, आप तो उनको जानते हो। देखिए, किसी इंडिविजुअल के बारे में ये कॉन्फ्रेंस किसी और मकसद से है कि हम जनता की आवाज़ सुनने के लिए। शोएब जी हमारी पार्टी में थे, कल तक वो सीए के बारे में हमारे साथ थे, तब तक ये बोलते रहे कि केजरीवाल जी आप बोलिए तो सही, आपका स्टैंड क्या है। आज वो उनके गले लग रहे हैं, मेरी समझ के बाहर की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा सीनियर आदमी अगर ऐसी बात करे, कल तक वो गंदे पानी की बोतलें लेके, आपको फोटो भी दे देता हूँ मैं, कि अपने गले में गंदे पानी की बोतलें लेके घूमते रहे कि दिल्ली की जनता मर रही है गंदे पानी की वजह से, तड़प रही है। आज वो उन्हीं को गले से लगा रहे हैं। ये जो बात अभी थरूर साहब ने कही कि एक तरफ पुलिस का रवैया, बिना वीसी की परमिशन के हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में चले गए, लाइब्रेरी के अंदर अत्याचार करते रहे। दूसरी तरफ जेएनयू के बाहर साइलेंट स्पेक्टेटर, व्हाई वर दे स्टैंडिंग आउटसाइड व्हेन दे वर फुली अवेयर कि अंदर किस तरह से बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। वो उस दिन वहां की लाइटें बंद कर दी गई, पुलिस के सामने वो मास मैन बाहर निकले, देयर वाज नोबडी टू टच देम। व्हाट वाज द रीजन? इसका मतलब किसी ना किसी का इशारा तो हुआ होगा। ये मेरी बहन ने बोला कि इस स्लोगन की बात, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, कांग्रेस पार्टी इज डेडली अगेंस्ट दोज पीपल हु रेज स्लोगन अगेंस्ट इंडिया। वो हम किसी भी कीमत में टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन मैं शाहीन बाग में गया, 1 तारीख को रात को झुंड के झुंड आ रहे थे बच्चों के, हमें चाहिए आजादी, गांधी वाली आजादी, हमें चाहिए आजादी, अंबेडकर वाली आजादी।
हमें चाहिए आजादी, नेहरू वाली आजादी। हमें चाहिए आजादी उन लोगों जैसी जिन्होंने अपने जीवन के बलिदान जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और इस देश को आजाद करा। दीज वर द स्लोगन। ये लोगों के मुंह में गिरा जा रहा है, ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर कोई गुनाह कर रहा है और कोई गलत स्लोगन करता है, हम उसको बोझ करते हैं और आवर पार्टी इज डेडली अगेंस्ट है। मेरा सवाल शशि जी से है, सवाल तो जवाब मुझे दे दीजिएगा। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल इतने एग्रेसिवली इस इशू को नहीं उठा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या लग रहा है? जस्टिफिकेशन सिर्फ इतना वो दे रहे हैं कि पुलिस मेरे अंडर नहीं है, और दूसरा ये है कि आपको कैसा लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को ये प्रभावित करेगा सीए और देखिए, केजरीवाल साहब शायद चाहते हैं कि प्रो सीए लोग और एंटी सीए लोग दोनों उनके साथ रहे, इसलिए वो कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो नहीं लिया अब तक। लेकिन हम कहें कि दोनों तरफ के लोग उनको अभी शिकायत देना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी इस स्टेट का मुख्यमंत्री हो और वो आप मुंह खोल के कुछ बता नहीं सकते हैं, तो किस स्टैंड पे उनको वोट मिलना चाहिए? आपको पता है कि मेरे ख्याल में आज सुबह उसने कहा था मीडिया को कि ये दिल्ली पुलिस को शायद आदेश मिले हैं कहीं और से, तो वो क्या करेंगे बेचारे। देखिए, दिल्ली पुलिस को कहीं और से आदेश मिलने दीजिए। आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपको मुझे पता नहीं कहां से आदेश आ रहे हैं, लेकिन किसने आपसे कहा कि आपके प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसा हिंसा हो सकता है और आपको कुछ कहना नहीं है? किसने आपसे कहा कि आप ये इंजर्ड स्टूडेंट्स को विजिट भी नहीं करेंगे, आप जाके मिलेंगे नहीं, उनकी हालत देखेंगे नहीं? किसने आपसे कहा है कि इस विषय पे आपको चुप रहना चाहिए, कि कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं लेना चाहिए? आपको तो आदेश देने वाला कोई नहीं है, आप ही है मुख्यमंत्री। और आपने जब 4 साल पहले 5 साल पहले ट्वीट किया था शीला दीक्षित जी के बारे में कि वी डोंट वांट सच ए हेल्पलेस चीफ मिनिस्टर, अब तो इसी ट्वीट उनको जरा पढ़ने दीजिए। डू वी वांट सच ए हेल्पलेस चीफ मिनिस्टर? क्या जब हमारे बच्चों, काफी हर माँ बाप से पूछना, आपके बच्चों के सिर पे लाठी किसी ने चलाया और आपका मुख्यमंत्री जाके उनसे मिलेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं, कुछ नहीं, और बाहर से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, उसका मतलब क्या होता है? तो मैं केजरीवाल साहब से पूछूंगा कि कुछ ना कहने से, हिम्मत नहीं दिखाने से आपको फ्री पास मिलने वाला नहीं है। No, but you do look at the Congress Party's problem here. Subhash Chopra ji is a very honest man. He cannot invite such suggestions until the elections are officially announced by the Election Commission. Mr. Manoj Tiwari can announce the elections earlier, but Subhash Chopra can only do it after the Election Commission has announced it. So to say that it's an eyewash that he's going through with this now is unfair, because he could not have done it earlier, number one. Number two, the Congress Party, obviously as a responsible political party, as a party that has ruled Delhi many times, knows what the big issues are. But it wants to be receptive to what people feel. Absolutely. And those could be issues of detail, those could be issues of changing perspectives. Let's hear what's on people's mind. We will also get a sense of what is more important to people and what is less important, judging on how much they come back with. But the Congress Party is not sitting in ignorance. We are not sitting relaxed saying we don't know. We have our ideas, but we want to hear what the public also thinks. Shapak and Tanhari has become a battle between BJP and the Congress. As at number of places, your party workers and leaders are providing free tickets to the students for spinning off to Shapak, while BJP is providing free tickets to Tanhari. So how you look at it? And the second question, sir, Mamata Banerjee has decided not to attend opposition meeting on January 30th. So how you look at it? हिंदी में सर हिंदी में, और एक बात इसमें ऐड और कर दीजिएगा कि बीजेपी के सांसद ने ये भी कहा है कि वो इस फिल्म को नहीं देखेंगे, बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि हम तो फिल्म क्रिटिक्स थोड़ी है, हम तो राजनीतिक हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जब किसी ने हिम्मत से आके हमारे विद्यार्थियों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई कि उसके वजह से उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए कि बीजेपी की तरफ से कोई बॉयकॉट हो जाए उनकी फिल्म से। इसलिए हमारे तरफ से हम भी सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। हम भी दिखाना चाहते हैं कि अगर आप जनता के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, तो हम भी आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार। इसलिए हम कहते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स, शी केम टू बी विद कॉलेज स्टूडेंट्स,
कॉलेज स्टूडेंट्स को अगर हम टिकट्स दे सके कभी, इसमें क्या बुराई है? मेरे ख्याल में हम सब ये पिक्चर अब तक देखे नहीं है। देखने के बाद फिल्म बारे में हमारी कुछ राय हो सकते हैं, लेकिन वी डू नॉट वांट एनीवन टू बी बॉयकॉटेड बिकॉज ऑफ शोइंग करेज एंड प्रिंसिपल टू स्टैंड विद स्टूडेंट्स। यही बात, नथिंग एल्स। अच्छा, आपका ममता बनर्जी से आपको पूछना पड़ेगा कि वाई शी चोजन टू बॉयकॉट। All I can say is she is welcome. Sonia ji has invited her. She is welcome, but it's not for me to speculate on her motives. You have to ask her yourself. और आखिरी आपने क्या कहा? बीजेपी का संसद यही चीज है। सांसद ने कमेंट किया है कि वो फिल्म का बाइकआउट कर रहे हैं और बाकी लोग भी करें। नहीं, तो ये हम चाहते हैं कि इस बॉयकॉट को रेजिस्ट करें, क्योंकि अगर आप कोई और कारण दिखाएं तो हमें शायद इसके ऊपर राय नहीं होते, लेकिन यही कारण है कि दीपिका पादुकोण ने जो इस फिल्म का स्टार है कि उसने आके जेएनयू में जाके इंजर्ड स्टूडेंट से मिल लिए। ये कोई कारण है सिनेमा बॉयकॉट करने के लिए? हम कैसे सह सकते हैं? नेचुरली विल स्टैंड बाय। सर मेरा सवाल है, सर आपने ये स्टार्ट किया है कि अपने सुझाव दिए, सर पत्रकार भी एक तरीके से माध्यम बनते हैं, आपने बहुत सारे माध्यमों का जिक्र किया। सर कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो शाहीन बाग के आसपास के रहने वाले हैं, जामिया के आसपास के रहने वाले हैं, बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, खास करके रोड, क्योंकि 15 दिसंबर से वहाँ रोड बंद है, तो नोएडा की तरफ जाने वाले लोगों को घंटों सामना करना पड़ता है डीएनजी के आसपास। क्या सर आने वाले समय में आप, शशि जी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस वहाँ देखने को मिलेगी? क्या आप ये चीज सपोर्ट करते हैं? क्योंकि लोगों का ना सिर्फ बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, बल्कि जो कम्यूटर्स है उनको भी बहुत ज्यादा इशू आ रहा है सर। देखिए, मैं सुना हूँ कि प्रॉब्लम्स है, मतलब नेचुरली, क्योंकि शाहीन बाग तो नोएडा के जिस इस पार है और रास्ते में तो नेचुरली कोई ब्लॉकेजेस हो जा रहे हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे देश में। और जब लोग चाहते हैं कि उनकी जो इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स वो दिखाने चाहेंगे सरकार को, तो हम नेचुरली हम भी उनके साथ हैं इन स्पिरिट। सोच लेते हैं कि क्या 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 मौका बना। आपको पता है कि कोई भी जेन्युइन इमरजेंसी में तो हम नेचुरली अथॉरिटीज के साथ ही कोऑपरेट करेंगे। जैसे केरला में शायद आपने आज ट्विटर में देखे होंगे, एक एम्बुलेंस आ रही थी और पूरे डेमोन्स्ट्रेशन दोनों तरफ होके एम्बुलेंस को जाने दिया। और बंगाल में बीजेपी का लीडर कहा कि एम्बुलेंस कोई और रास्ता ले ले, बीजेपी यहाँ से निकलने वाले नहीं है। हम तो उस तरफ के आदमी नहीं है। हम चाहते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एनी इमरजेंसी, एनी जेन्युइन प्रॉब्लम, वी शुड हेल्प। बाकी सब जो आपने कहा हम सोचेंगे। आई डोंट थिंक वी हैव एन इजी आंसर फॉर दैट। वी कैन नॉट टेल देम कि आप डेमोन्स्ट्रेशन मत कीजिएगा, नेचुरली, बिकॉज वो जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, कन्विक्शन से कर रहे हैं। सोचेंगे कि क्या 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 व्हाट रिलीफ कैन बी गिवन। हाँ, मैं तो अभी कोई डेट नहीं दे सकता हूँ। मुझे जामिया में तो मेरे ख्याल में परसों जा रहा हूँ मैं, उनके इनविटेशन पे। मुझे अनफॉर्चुनेट दूसरे कमिटमेंट्स भी है, 3-4 भाषण सब दिल्ली में ही है। बीच में टाइम देख के, उनकी सुविधाएं भी देख के मैं हर जगह जाना चाहता हूँ, क्योंकि केरला में मैं तो काफ़ी ये सीए के खिलाफ रैलीज चले हैं, उद्घाटन किए हैं, भाषण भी दे दिए हैं। दिल्ली में अभी आया हूँ सीए के बाद, अभी यही पहला मौका है कि लोगों से मिलने और बात करने के लिए। तो नेचुरली जो भी सुभाष जी चाहते हैं, मैं तो पार्टी का सेवक हूँ और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता के अनुसार जो वो चाहते हैं मैं भी करूँगा। Dr. Tharoor, do you think that incidents like what happened on JNU are first in a series of incidents that could be created over the next month to polarize Delhi voters? And if so, what would to create a narrative that is away from the issues that Delhiites are facing? Do you feel that this is what's happening, and how would the Congress party counter that narrative? No, first of all, I don't want to speculate about what may happen in the future, what the intentions may be in future. I certainly hope it is not the first of many such incidents. One was bad enough. It's a blot on our country. Even the foreign press has been reporting it. It's really a shame that this was allowed to happen. And I hope there will not be a repetition. I hope there will not be a second such incident. But definitely the intention of the BJP in almost every election they fight is to polarize the voters. And we hope that the voters of Delhi, being fairly savvy, educated people, will resist any attempts to polarize them in any sort of way. As far as we are concerned,
The assault on students is a naked attempt to take the public's attention away from their transcendent failures. The failures on the economy, which has reduced our growth rate to a pathetically low level and raised our unemployment rate to a 46-year high. Their failures on every single element to do with actually improving the lives of ordinary citizens. Pollution, which every Delhi citizen lives with. What has the government done? Other than declaring belatedly, after some years of pressure from all of us, declaring a clean air policy which they've done nothing to implement. The fact remains that the central government has failed and it wants to come to Delhi and fail also. I don't think the voters of Delhi will give them a chance. जी कमेटी बनाया हुआ है. कमेटी तो ऑलरेडी है, उसमें गठन नहीं करने की जरूरत. बेस्ट ऑफ कमेटी इज देयर, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर हैज बीन अडॉप्टेड. और जहाँ पे जो लोग नहीं हमें कॉन्टैक्ट कर सकते, हम लोग खुद उनके पास जा रहे हैं. रेडी पट्टी वाले हैं, हमारे दूसरे जो अनऑर्गेनाइज चीज़ें वर्कर्स हैं, उनके पास भी हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी फीलिंग्स को हम इस पर इनकॉर्पोरेट कर सकें. Naturally, ये तो अभी कोर्ट अदालत को तय करना पड़ेगा, लेकिन I think it's a very reasonable request. Thank you. Okay, thank you all very much. Jai Hind. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.